Super Hits 93.5 Red FM पे मैं हूं तुहिन आपके साथ. Welcome once again, and today I have with me the man who is making a debut as a director with Rocket Boys, which is a big story of two physicists coming together and creating history. And this story is narrated by none other than the man himself, Abhay Pannu. Thank you so much, Tuhin. Thank you. I'm so glad to be a part of the show. Thank you so much. Thank you for calling me. Thank you. कैसा लग रहा है ऐसा, मतलब डेब्यू करके? अभी तक तो असिस्टेंट डायरेक्टर वगैरह थे, अभी डायरेक्ट करने को मिल गया है. सही बताऊं तो I'll know when I've regained my energy. I'm too tired to feel anything right now. But of course, on a serious note, I'm very happy. I couldn't have asked for a better debut. So yeah, of course, it's great. It's a great feeling. सही है ना ऐसा. मतलब पहले बॉलीवुड में लाइन लगती थी, अभी ओटीटी आने की वजह से यू गॉट मोर एवेन्यूज टू टेल योर स्टोरीज. True, absolutely. And the best thing is that more people, of course, getting an opportunity to tell their stories. It's also about the variety of stories that we are able to tell. अलग अलग किस्म की कहानियां जो हम बता पा रहे हैं विदाउट एनी कि अच्छा आप ये नहीं बता सकते, इस तरह की कहानी नहीं बता सकते. I would have never imagined a story based on these people's lives made in 10 years back. And also being appreciated so much. So yeah, I mean, with the advent of OTT, young filmmakers like me, also most important thing is that we are now able to tell stories from all milieus of the country. Now you get much bigger canvas because now you're not restricted to 1.5, 2 hours, 3 hours. अब तो कहानी चल रही है, अब तो डायरेक्टर की तो निकल पड़ी है. True. हम लोग थोड़ा कभी इंडल्ज भी कर लेते हैं ज्यादा, but ठीक है. But tell me one thing, you assisted Nikhil Advani. So how was it making this concept, telling him this concept? How did this concept evolve? So okay, पहली बात अगर if I talk about Nikhil Advani, who is my guru, I've learned everything from him. So the concept, and I'll be dishonest if I tell you कि भाई ये concept मेरा था. This concept wasn't mine. This was brought to Nikhil Advani by Siddharth Roy Kapoor. Both of them were wanting to collaborate on this for a life. So ये in 2019 actually 100th birth anniversary थी Dr. Vikram Sarabhai. So they wanted to collaborate and make a show on Vikram Sarabhai's life, and then they realized, no, let's make a show on Homi Bhabha as well. So the concept then given to me in 2019. On my birthday, Nikhil Advani came to me and he told me, I was assisting him on Mumbai Diaries 2611, and he came and told me, Abhay, the only gift that I can give you is that I'll produce your first film. So I was like, okay. And so recently, when the show was coming out, I told him, sir, remember 2 years back you said this to me. So he said, don't remind me of my sins. So, but yeah, the concept was given to me, and then I started writing it for a year and a half. I wrote the story, I wrote the screenplays and the dialogues with a lot of people. A lot of people came in, research, helped, of course. But yeah, the concept was brought to us by someone else. No, I could see you've played a lot with your camera. You experimented a lot with your direction. Initially, full focus on the faces, full zoom in on the faces, and all the characters are shown and they're coming out. और आप सबकी detailing बता रहे हो वहाँ पे, which I really like because it's a different kind of direction. Wow, thank you so much. I'm glad that you noticed that. Yeah, सबसे important था तुहिन जब when I was trying to tell the story was that I was not trying to tell the story of two biggest scientists of the country. I wasn't trying to tell the story of the cardboard cutouts of these characters. I wanted somehow to show these men. I wanted to tell the story through an emotional lens. Of course, their achievements, scientific achievements, and their contribution in nation building is so very well documented that, I mean, you do one search and you know what these people have managed to do in their lives. Right. But what hadn't been done was that we hadn't seen what these people felt. What were their dreams? What were their aspirations? And why they wanted to do what they did. So, us sense mein, I wanted to get inside the people's heads. And the fact that you just said, we zoom into people's faces. I wanted to stay with people's faces and to figure out, okay, so this is what he must be feeling, a sense of betrayal, a sense of friendship, a sense of love, a sense of
aspiration, a sense of why aren't people understanding what I'm trying to tell them? This is what the country needs. Why aren't people understanding? Like most of the times, I believe that these people were so ahead of their times that in my opinion, इनको बहुत time लगता होगा लोगों को समझाने के लिए कि यार guys, this is what you need. Like Steve Jobs has a very famous quote of Steve Jobs says that you have to tell the consumer what he wants before he knows what he wants. Right. So I think that with these men, they knew that this is what the country is going to at one point of time need, and it takes some time for people to understand the importance of their arguments. So उस sense में the technique, the tool that we used to tell the story is something that you've so very well put. कि भाई इस आपके जो तरीका था कहानी बताने का वो ऐसा था. So I'm glad that you've understood that, and I'm so happy that hopefully people are also understanding as well. देखिए 2 लॉन्च हो गए, एक तो सैटेलाइट लॉन्च हो गया, एक अपना लड़का लॉन्च हो गया. Actually, yeah, we hopefully और launches हों अच्छे. Of course, yes. खैर देखो होमी बाबा की तो फैमिली नहीं है, बट विक्रम साराभाई की फैमिली के साथ आपने यू मस्ट हैव टेकन द फीडबैक एंड एवरीथिंग, यू मस्ट हैव सैट विद देम. क्या फीडबैक्स मिले, क्या उन्होंने आपको कुछ अलग बताया? How was it meeting the family and getting to know about Vikram Sarabhai? See, मलिका साराभाई और रेवंता साराभाई, मोस्टली मलिका साराभाई जी से हमारी बहुत इंटरेक्शंस थे और उनके साथ इंटरेक्शन बहुत ही जरूरी थी. बिकॉज यू नो, जैसे मैंने कहा कि उनके इन साइंटिस्ट के अचीवमेंट्स, इनके इंस्टीट्यूशंस खड़े किए हुए तो बहुत इजी, वेरी वेल डॉक्यूमेंटेड है. लेकिन वो कैसे थे, इंसान कैसे थे, उनकी पर्सनैलिटी कैसी थी, वो अपने फैमिली के साथ कैसे थे, वो अपने फ्रेंड्स के साथ कैसे थे, तो वो जो नुआंसेस थे वो उन्होंने हमें बताए जो बहुत बहुत जरूरी थे. हम लोगों ने पहले जो एक स्क्रिप्ट लिखी थी उसमें मैं उनको पास लेके गए, हमने कहा कि मैम ऐसा है, उन्होंने कहा कि नहीं, पापा वाजंट लाइक दिस, पापा वाज वेरी रिजर्व्ड, पापा डिड नॉट शो हिज इमोशंस दैट वेल, ही यूज्ड टू कीप इट इन विद हिमसेल्फ. तो फिर हम लोगों ने वापस से उनके कैरेक्टर को थोड़ा रिविजिट किया. बट अगेन वो उनका सपोर्ट वाज ट्रेमेंडस, एंड उनका सपोर्ट, उनका अप्रूवल लेना भी बहुत जरूरी था क्योंकि उनके फादर और मदर की कहानी थी तो बहुत जरूरी था. लेकिन फ्रॉम टाइम, मतलब बीच में उन्होंने बहुत हमको सपोर्ट देती रही. वो कभी नर्वस भी था ऑनेस्टली, अरे यार व्हाट इज मलिका गोइंग टू से टू दिस नाउ, ओके लेट्स सी. बट शी यूज्ड टू अंडरस्टैंड एंड शी यूज्ड टू अलाउ, and you know, she gave us the canvas कि this is the canvas guys, you have to paint within the canvas, इसके बाहर आप पेंट नहीं कर सकते. So we tried to paint within that canvas. And yeah, when she saw the show, before the show, we of course had to show it to her. I mean, about a couple of weeks before the release of the show, we showed it to her, and she had tears in her eyes by the end of the show, and she said that thank you for making this, and thank you for making this so well. So I think that's a victory in itself. पर ये भी सुनने में आया कि ये पोस्ट 1962 एरा के ऊपर सेकंड सीजन भी आने वाला है, तो क्या एपीजे अब्दुल कलाम भी आने वाले हैं? बिल्कुल, उनका कैरेक्टर इन दी एंड हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था 7th एपिसोड में. सेकंड सीजन में एपीजे अब्दुल कलाम का रोल काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू फर्स्ट सीजन, और 63 से लेकर 1974 तक की कहानी है वो. वाह, चलिए वो भी देखेंगे. बट अभी फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट यू, कांग्रेचुलेशंस, राइड हाई on this success, and may you get more and more amazing opportunities and you keep entertaining us. Thank you so much, Dwayne. It was a pleasure speaking to you, and I'm so glad that I hope you liked it, and I hope that you'll tell other people to watch the show as well. Now, before we end, I've got one Bollywood game to play with you. Let's see whether you can play that or not. Okay, very, very simple. It's called Bollywood Antakshari, where we will take the names of the actors. Okay? Only the actors. No directors, no producers, only the actors. Let's start with Jim Sarb. H पे खत्म हुआ ना? H पे खत्म होता है. Oh God. Hrithik Roshan. N से Neil Nitin Mukesh. Why are you ending with H all the time?
एक नाम आ रहा है मेरे दिमाग में, सिंगर भी है, एक्टर भी है। हिमेश रेशमिया। Al Kapoor. Thanks. Al Kapoor, what a player. Kapoor. What a player. Oh, Ranbir Kapoor. Oh, Ranbir Kapoor. रणबीर कपूर फिर से आ गया है। राकेश रोशन। एन। नागार्जुन। नागार्जुना। आहा। एन पे खत्म करोगे, ए पे खत्म करोगे? ए पे। ए पे, ओके। ए से अमिताभ, देवी सज्जनों, अमिताभ बच्चन। एन से एक्टर्स ओनली। एक्टर, एक्ट्रेसेस। एक्टर भी चल सकता है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। नेहा शर्मा। नेहा शर्मा, फिर से ए आ गया। देखा, अब मेरे को एक ही दिए जा रहे हो। मेरे नाम से एक एक्टर है। अमोल पालेकर। ओके। आर से रणवीर सिंह। एच। फिर से एच आ गया। ओहो, ऋषिता भट्ट। ये एक अंताक्षरी है जहां पे सिर्फ यहीं पे ऋषिता भट्ट का नाम आता है। लोगों के साथ मैंने खेला है। ओके। तापसी पन्नू। तापसी पन्नू कहा था मैंने। तापसी पन्नू was well played. That I've got. क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आपने देखा कैसे मैंने धीरे से अपना नाम भी उसमें डाल दिया। हाँ, मैं देखा बिल्कुल। क्योंकि अभय किसी से डरता नहीं है, अभय को किसी का भय नहीं है। ओके, couple of more questions I wanted to ask, अगर ये सीरीज आप 90s में बनाते तो who would be Homi Bhabha and who would be Vikram Sarabhai for you? विक्रम साराभाई तो I would have gotten Amir Khan to play. ओके, क्योंकि परफेक्ट होना चाहिए, लॉन्च एकदम सही होना चाहिए, और क्योंकि कान ऐसे होने चाहिए। सॉरी yeah, I can hear it. Yes, and other one? होमी भाभा के लिए सलमान खान। अच्छी बात है। चलो रॉकेट लॉन्च करते हैं आज। तुम्हारा भी लॉन्च हो जाएगा, हम भी लॉन्च हो जाएंगे, और फिर रॉकेट भी लॉन्च हो जाएगा। ले लो भाई, आके अवार्ड ले लो, ले लो। But do check out Rocket Boys. It's streaming now, and it's a story about our historians and of course the physicists who changed the space and nuclear era of India. Thank you so much, Abhay, for joining us, and all the very best. Thank you so much. It's my pleasure. Thank you. Lovely chatting with you. All the best. Thank you. See you soon. And Super Hits 93.5 Red FM. बजाते रहो तुतुर तुतुर तुहिन के साथ। अच्छा, जाने से पहले सिंस यूर अ डायरेक्टर, सो ये मैं हमेशा हर एक डायरेक्टर के साथ ये मेरा सौभाग्य है और मेरा फर्ज बनता है कि दिस इज माय फ्रंट, दीज आर माय प्रोफाइल्स, प्लीज कीप दिस इन माइंड। यस, बस ये आपने कहकर आई थिंक यू नेल्ड द ऑडिशन, you know, see. Thank you so much. Have a good day and all the very best. Thank you so much. Thank you so much. Bye-bye. Take care. For best entertainment, subscribe to Red FM Bengaluru page. For more updates, press the bell icon.